Meanwhile, nothing's changed in public hospitals across the city of Mumbai. Mirror Now's reporter Richa Sharma entered 4 public hospitals and walked into wards without anyone stopping or questioning her. This a day after the state promised enhanced security and limited entry to outsiders within hospitals. Take a look. My first stop is Science LTMG Hospital, which is also the place where a lady resident doctor was physically assaulted by a patient's family while the doctors were on protest. Remember, it was also an epicenter of the doctors' protest. Let's see if I'm allowed entry. ID हाल है। हेलो सर। अभी तुम पेशेंट है तो क्या है? आप पेशेंट के हिसाब से डॉक्टर को ले जाते हैं। हाँ। But that was all. The scenario within the hospital was not very different. Entire families still accompanied patients to the OPD and crowded general wards. Outside the emergency ward, I noticed there are no guards at the entrance. I spoke to some of the people standing outside the emergency ward. आप लोग पेशेंट है क्या? नहीं, पेशेंट नहीं, देखने आए। आपको मिला अंदर आने के लिए विदाउट पास? नहीं, गुजर गया ना। हाँ? नहीं, आपको अंदर आते वक्त पास मांगा था? नहीं, गुजर गया। The situation outside the OPD or outpatient department was similar. People accompanying patients were allowed free entry. Since entry passes are not ready yet, patients were being asked to show their file to enter. लोग अलाउ कर रहे हैं आपको अंदर बिना पास और ये सब? वो तो पता नहीं। आप ओपीडी के लिए आए हैं किसी और के लिए? बच्चे को खून चढ़ाते हैं, बच्चे हमारे पहले से में है ना, तो अलाउ किया दोनों। हाँ, ऐसे कुछ कार्ड वार्ड मांगा था? नहीं। आईडी वाईडी पूछते हैं बोलते हैं? आप पूछते हैं, बट अभी आईडी नहीं है तो फाइल्स वगैरह दिखाते हैं। ऐसे कुछ लिमिट किया है कि 2 लोग भी जाएंगे या ऐसा कुछ नहीं, सब जा रहे हैं। My next stop is KEM Hospital, where I very comfortably entered the hospital gate, as did many other patients. And despite the presence of a security official at the gate. आपको यहाँ अंदर एंटर करते हुए आईडी वाईडी कुछ पूछा? मैं भी अंदर गया नहीं, बाहर से अंदर कुछ नहीं पूछा। मैं पूछूँ कि आपको बाहर से अंदर आने के टाइम पे कुछ बाहर से आईडी कुछ पूछा था क्या? अंदर से बाहर आने के, बाहर से अंदर आने नहीं, गेट पे कुछ नहीं मांगा। आप पेशेंट हैं? खाने आए हैं लेकिन मैडम पहली बार आए हैं, मैं पेशेंट। I walked through the crowded, unguarded OPD and shockingly, easily accessed the general ward of the hospital where patients are admitted. Sir JJ Hospital was my third destination, where security was present only at the main gate. There were no guards at the other entrances of the hospital, which meant getting in was easy. Again, security was present only at the emergency ward. The rest of the hospital was unguarded. The OPD again was crowded with patients and relatives. And there is no pass system or security. Gate पे से कुछ pass system वगैरह शुरू किया है? पेशेंट आने वाले थे, तो आने वाले रहेंगे ना, हमारा जो वार्ड में कोई रहेगा पेशेंट इंचार्ज, लाल पट्टे वाली इंचार्ज रहती है, वो देगी पास देते हैं। वैसे सब लोग आ रहे हैं आज क्यों आज ज़्यादा थोड़ा सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़े, तो ज़्यादा 2-4 दिन में डॉक्टर लोगों का ये स्ट्राइक था, बीच में लंबे हुए अभी पब्लिक भी ऐसे हो गए, वो डॉक्टर को मारते थे, ये लोग भी ऐसा ही है।
The last stop on my list was Nair Hospital. Again, security at the gates, but nobody stopped me. I easily entered the maternity and pediatric OPD without any questions being asked. The state government and authorities had promised striking doctors to be provided with more security. They had also agreed upon allowing only 2 people per patient in OPD and other wards. I walked into these hospitals, 3 BMC run and once run by the state government, one day after the strike was called off. And as you can see, not much has been changed on ground. This is Richa Sharma for Mirror Now, Mumbai. BMC Commissioner Ajay Mehta in the meantime maintains that security has become tighter and access has been controlled in BMC hospitals. Listen in to what he told our reporter Disha Shah. कि 400 लोग हम महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी से लेने वाले हैं और उसके बारे में हमने सिक्योरिटी प्लान भी हॉस्पिटल्स के लिए तैयार किया है और ये जो लोग 400 आएंगे ये 400 लोग एक्सेस कंट्रोल के लिए रहेंगे कि हॉस्पिटल के अंदर कौन जा रहा है उसके ऊपर हमें अब कंट्रोल चाहिए.